So last time we were dis discussing about the deadlock handling, right? So in the deadlock handling, we have already gone through the techniques required for handling the same in the case of distributed computing. Now, in the case of centralized approach, what happened is that we seek for this global wait for graph. You can see that transaction. This is site 1, this is site 2, and this is global. Right. Global wait for graph. Just a minute. Okay. Okay. What you can see from this diagram? Can anybody of you tell me? So this T1, T2, T3, T4, T5, these are our transactions. Transactions. Right. This is site 1, site 2. This is global. How the local and global wait for graphs actually looks like. See, T5 is requesting something from T1. T2 is requesting something from T1. T2 is requesting again from T3, right? आप लोगों को जब ये एरो मिलेगा, मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बोला था कि डेडलॉक का जो अवॉइडेंस और डिटेक्शन टेक्निक है, एक बार देख लेना। और आज मैं यही प्लान करके रखा था, आप लोगों को लिख ले दूंगा वो एल्गोरिथम। ओके, लेट्स सी, आई मे गिव इट यू। तो कोई भी रिसोर्स हम ऐसे बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? that this transaction is requesting for the resource R. But यही नहीं लिख के, if we write like this means what? The resource is being allocated to T. The transaction. Right. Okay. Similarly, यहाँ आप तो आप distributed computing की बात कर रहे हैं, site 1, site 2, ठीक है? तो यहाँ कुछ ऐसा चीज जैसे हम दिखा रहे हैं कि T1 के पास जो चीज है, right? This is being requested by T5. Then T2 is requesting something from T1. It is again requesting something from T3, like that. Suppose if this happens to occur, let me change the color, then it is obvious that some kind of deadlock may occur. Why? Because the cycle exists. And you already know that if the cycle exists, then what happens? If the cycle exists, then that is the case when deadlock occurs. Deadlock. Okay. Yes, sir. Very good. Okay, these are some more graphs, wait for graphs. Very simple. If you got the concept, then this is very clear. Sorry. Supposing that the starting from the start, that is just the figure show you. T2 releases resources as well, resulting in a message remove T1 implies T2 message from transaction manager at site T1 that has one to the container. आप लोगों ने शायद अभी तक भूला नहीं होगा कि हमारे पास क्या होता है, ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर। ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर का काम क्या था? कैन एनीबॉडी टेल मी? ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर का ये काम था, जो भी मैसेजेस थे, जैसे हमने एक रिक्वेस्ट भेजा है, कोई एक ट्रांजैक्शन ने एक रिक्वेस्ट भेजा है, तो वो रिक्वेस्ट जो पास कर देने का काम है वो कौन करेगा? आपका ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर। ओके, सिमिलरली वी हैव ट्रांजैक्शन मैनेजर। So T2 releases resources at S1 का मतलब क्या है? That resource can be allocated to someone else. Are you getting me? Because T2 is complete with that resource. Now that resource is released, then that message passing will be the responsibility of the coordinator. So it will allocate. That means it will pass the message and then thereby allocated that particular resource to someone who has already requested for it. Okay, then T2 requests a resource held by T3 at site 2. But जब T2 ने
S1 का जो S1 जो साइट था उसमें जो रिसोर्स यूज किया था that it releases because it is completed with that resource. But what happens now? It requires one more resource at site S2, but that resource is already been acquired by from T3 T3 at site S2. 2. ओके, तो एक रिसोर्स तो इसने छोड़ दिया, तो अभी और एक रिसोर्स के लिए वो रिक्वेस्ट किया है, तो इसलिए हमने कैसे लिखा T2 इम्प्लाइज, मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था T2 इम्प्लाइज T3, मतलब ये है जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने लिखा था प्रोसेस और आर के केस में P1 R1 से P2 R2, ठीक है, ये सब रिसोर्सेस है। आप रिसोर्स मतलब आप समझ सकते हो कि दैट मे बी ए प्रिंटर, these are the two process. So in this way, we used to we used to show that resource allocation graph in the case of operating system, but same thing here, but we are now just concentrating on the transaction. हमने ऐसे लिखा T1 implies T2 means what? Some resource now acquired by T2 is being requested by T1. Similarly, T2 implies T3 means what? Some resource being already acquired by T3 now being requested by T2. Right. Suppose further that insert message reaches before the delete message. This can happen due to the network delays, and the coordinator would then find a false circle. T1 implies T2, T2 implies T3, T3 implies T1. ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखो मैसेज पास करना पड़ रहा है ना, मैसेज क्यों पास कर रहे हैं, व्हाई वी आर सेंडिंग, मतलब दैट कोऑर्डिनेटर इज सेंडिंग द मैसेज, क्योंकि एक रिसोर्स रिलीज कर दिया, ये भी तो मैसेज फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यस और नो। कोई रिसोर्स पहले एक्वायर करके रखा था T1 ने सपोज, हाँ सॉरी T2 ने एक्वायर करके रखा था S1 में, अब वो जो रिसोर्स है दैट T2 रिलीजेस दैट रिसोर्स, now what happens, this religion is okay, but this thing should be known by each transaction at that site, yes or no. But what happens due to the network delay, remember we are talking about, again I'm saying distributed computing, right? So distributed database. So what happens? This thing should be going through network, but due to the network delay, up in this case, a simple microsecond or millisecond matters a lot. Because if we don't get the message that this resource is free, then again what happens? We need to wait for that. So इसी चीज के कारण, इस नेटवर्क डिले के कारण एक्सिस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स साइकिल। क्या बोलते हैं हम? फॉल्स साइकिल, क्योंकि ये मैसेज पास नहीं हुआ कि T2 ने वो रिलीज कर दिया, वो रिसोर्स रिलीज कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, वो रिसोर्स रिलीज होके फ्री है, आइडल है, किसी को एलोकेट नहीं किया जा रहा है, तो दिस दिस इन दिस वे क्या होगा, कोई एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया था और जिसने रिलीज किया वो भी किसी और एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया था, सो इन दैट वे इट इज गोइंग टू जनरेट ए साइकिल, but actually in reality that cycle is never been generated if that message is passed at right time. Only because of the network delay, this cycle being generated, and this type of cycle is known as false cycle. Very important from your exam, so do write, okay, do write the definition of false cycles once again in the recorded lecture, then you are not going to forget it. Now false cycles will never going to be occur if two-phase locking protocol is used. अब देखा आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना, जब मैंने टू फेस लॉकिंग पढ़ाया था दिस डेटाबेस में, कि दिस थिंग्स इज अगेन वी आर गोइंग टू नीड दिस राइट इन सम फ्यूचर स्टडीज, सो हियर अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग, टू फेस लॉकिंग, 2PL, याद होगा ना आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को DBMS में? Yes, sir. ओके, तो जब अगर टू फेस लॉकिंग हमने यूज किया, इफ वी यूज टू फेस लॉकिंग, देन दिस फॉल्स साइकिल्स कैन नॉट ओकर। मैं आज जो क्लास है और आगे नहीं बढ़ाता हूं, अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है,
दिस क्वेश्चन में आपको एनालिटिकल एबिलिटी अप्लाई करना होगा. यू नीड टू अप्लाई योर ओन एनालिटिकल एबिलिटी. और क्वेश्चन क्या है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, बराबर कॉपी में लिख के फोटो खींच के मुझे ग्रुप में पेश करोगे कि फॉल्स साइकिल्स कैन नॉट ऑकर इफ टू फेज लॉकिंग इज यूज्ड. रीजन इज व्हाई. फॉल्स साइकिल क्या है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अभी समझ में आ गया कि जब नेटवर्क डिले होता है, रिसोर्स रिलीज हो गया, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट फास्ट एट द राइट टाइम, so thereby the coordinator will then what happen generate or generate or can say find a false cycle. Some transaction is waiting for some resource being allocated to someone else like that. Okay, but we are saying that if two-phase locking is used, then this thing is not going to be occurred. Reason is why. क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग कि टू फेस लॉकिंग अगर यूज करेंगे तो फॉल साइकिल ऑकर नहीं होगा, ये आपको बताना है. आर यू ऑल गोइंग टू डू दैट और नॉट? Yes, sir. ओके. Yes, sir. आज के कितने जन हो आप लोग? ओ, 4 जन है सर. अमलान देर से ज्वाइन करते हैं. राजेश बोल लीजिएगा उसको. Yes, sir.